हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गणित का ज्ञान। आप सबका स्वागत है गणित का ज्ञान में। आज हम लोग एक नए टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि कैलकुलस का ही सब पार्ट है। इसका नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सी द नेम इनडिटर्मिनेट फॉर्म, द फॉर्म विच यू कैन डिटर्मिनेट, जिसको हम डायरेक्टली डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, जिसका वैल्यू, उसे ही हम कहते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ सी, सपोज इफ आई टेक number of stars in universe divided by number of stars in universe. First of all, you see here I have written number of stars in universe. कितने स्टार्स है यूनिवर्स में हम लोगों को नहीं पता, अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, तो इसे हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं. We don't know the exact value, but we can say it will be, obviously it will be infinity. Now see, in the denominator also, number of stars in universe you can count. It is uncountable. Okay, अनगिनत stars रहते हैं यूनिवर्स में, so यह भी हम लिख सकते हैं क्या, infinity. We don't know the exact value of infinity. Whatever may be the large value, we say that the value is infinity by infinity here. Now this side, if I take, suppose, number of stars in universe divided by number of moles of O2 in universe. Now see here, as I have already said, number of stars in universe, we don't know the exact value. Whatever may be the large value, the value will be infinity. And see, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन यूनिवर्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स यूनिवर्स में कितना है वो भी अनगिनत है, तो इसे भी हम नहीं जानते, तो व्हाट एवर मे बी द लार्ज वैल्यू, ऑब्वियसली इट विल बी ऑल्सो इन्फिनिटी. नाउ टेल मी, ये जो दो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म्स मैंने जो लिखा है दो तरीके से, आर बोथ ऑफ देम आर सेम? No, both this form, this infinity by infinity form, are not same. Why? You see here I have written infinity by infinity. Both these infinities are same. Okay, this is, you see, same infinity by same infinity. Okay, this same infinity by same infinity. ये जो दो infinity है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये दोनों infinity एकदम same है. Whatever may be the value, exact value of infinity we don't know. So both these infinities are same. So we can cancel this and this will equals to 1. So this is not an indeterminate form. Okay, this is not an indeterminate form. ये indeterminate form नहीं है. But you see here, number of stars in universe divided by number of moles of O2 in universe. Both these infinities are not same. ओके, बोथ दिस इन्फिनिटीज आर नॉट सेम. ऊपर वाला का जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी अलग है, और डिनोमिनेटर में जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी अलग है. दोनों इन्फिनिटी, जस्ट लाइक द फर्स्ट केस, इज नॉट सेम. ओके, सो हियर वी कांट कैंसल दिस इन्फिनिटी विद द इन्फिनिटी ऑफ द डिनोमिनेटर. हियर इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं. पहले आप ये समझो कि ये दोनों ही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, पर ये दोनों ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर वाला इन्फिनिटी और नीचे वाला इन्फिनिटी बोथ आर सेम इन्फिनिटी. सेम इन्फिनिटी बाई सेम इन्फिनिटी वी कैन कैंसल दिस एंड विल गेट 1. सो दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. बट हियर यू सी, दिस ऑल्सो infinity by infinity, but this, the numerator, in the numerator the infinity is there, is not equals to the infinity of the denominator. So this is the indeterminate form. This infinity by infinity is a indeterminate form because we can't cancel this. Here see, ऊपर में भी सेम इन्फिनिटी है, नीचे में भी सेम इन्फिनिटी है, सेम फंक्शन से आया है इन्फिनिटी. बोथ आर द इन्फिनिटीज ऑफ द सेम फंक्शन, सो वी कैन कैंसल दिस एंड विल गेट 1, बट हियर वी कांट कैंसल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अच्छा, अब तक तो आप लोगों का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल गया है आई थिंक.
सो अब हम लोग इसे कैलकुलस में लिमिट के भाषा में पढ़ेंगे. सपोज सी इफ आई टेक लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी h by h. See, लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी h by h. ऊपर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे भी टेंड्स टू इन्फिनिटी. दिस इज ऑब्वियसली एन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, बट दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. व्हाई दिस नॉट एन इनडिटर्मिनेट? सी, h टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे भी h टेंड्स टू इन्फिनिटी, but both the infinities are of same function h. So we can cancel these and we'll get 1. This is not an indeterminate form. But if I take, suppose, limit h tends to 0 ln x by 1 by x. See, this also minus infinity by infinity. Why? Because we all know that ln 0 is minus infinity and 1 by 0 is infinity. So this is an indeterminate form. Why? See, because both the infinities are not same. The numerator tending to one infinity and the denominator also tending to not the same infinity as that of numerator. The denominator tends to a different infinity. Both the infinities are of different function. So we can't cancel here. This is an indeterminate form. तो इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहें कि हम ऊपर नीचे कैंसिल भी नहीं कर सकते. ठीक है. सेम 0 बाई 0 के केस में भी ऐसे ही होता है. लेट एक 0 बाई 0 वाला केस लेते. लेट h टेंड्स टू 2 h स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 बाई h माइनस 2. दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0 बाई 0. See, the numerator is also tending to 0. The denominator also tending to 0. So this is an 0 by 0 indeterminate form. Okay. See here, I have given here limit. Limit h tends to 2. Okay. This not that here the value of h will be 2. h tends to 2. H approaches to 2. So if h tends to 2, then h minus 2 tends to 0. So the denominator tends to 0. Similarly, the numerator also tends to 0. Here we cannot cancel the both the zeros of numerator and denominator because both the zeros are of different function. Okay. But if I say limit h tends to 0 h by h, this is also, see, the numerator also tending to 0, the denominator also tending to 0, but the numerator and denominator both zeros, both are tending to the same 0. Same 0 by same 0 means the zeros of numerator and denominator comes from the same function. Okay, so this is not an indeterminate form, though the form will be 0 by 0, but we can cancel the numerator and denominator since see here in the numerator also same 0 by in the denominator also same 0. So same 0 by same 0 we can cancel this and we will get 1. Okay, but in this case you see here it is an indeterminate form because the numerator also tends to 0, the denominator also tends to 0, but both the zeros are not of the same function. Both the zeros are of different function. Okay. So the conclusion is that 0 by 0 and infinity by infinity means that they are indeterminate form. No. See, if both the zeros or both the infinities of the numerator and denominator come from the same function, then we can cancel this and we will get 1. Okay, those examples are not will be of the form of indeterminate form. But if we take this type of examples, see here h tends to 2 h square minus 4 divided by h minus 2. Okay, here the बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो जीरो रखा हुआ है, जीरो और इन्फिनिटी, 0 by 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये अलग अलग फंक्शन से आते हैं. सो हियर वी कैन नॉट कैंसिल दिस. सो ये टाइप का आप लोगों का जब 0 by 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता है उसे ही हम कहते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अगर कहीं भी आप लोग 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देख लोगे और चेक कर कहोगे कि ये इनडिटर्मिनेट है, तो आप गलत हो. पहले चेक करो कि that both the infinities of numerator denominator
कम फ्रॉम द सेम फंक्शन और डिफरेंट फंक्शन। अगर वो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सेम फंक्शन से आते हैं, अगर सेम इन्फिनिटी बाई सेम इन्फिनिटी सेम 0/सेम 0 रहता है, तो वहाँ से हम कैंसिल करके हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर हम ये देखें कि दैट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का जो both the infinities and both the zeros come from different function, then we cannot cancel and we stuck, हम लोग वही अटक जाते हैं और इसे कहते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, द फॉर्म विच वी कैनॉट डिटर्मिनेट। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये अगर मैं ये लिखूँ कि 1/0 ये क्या है, 1/0 का वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी है और इट इज़ नॉट डिफाइंड। 1/0 इज एक्चुअली अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में जब भी आप 0 देखोगे तो वो अनडिफाइंड ही होगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। अगर आप लोग ये जानते हो कि 1/0 या एनी नंबर डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से इन्फिनिटी आते हैं, तो आप गलत जानते हो, ठीक है। 1/0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अगर डिनोमिनेटर में जब भी 0 आप लोग देखोगे उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, डिफाइन नहीं होता, इसलिए वो अनडिफाइंड कहा जाता है। लेकिन इफ आई टेक सपोज लिमिट h tends to 0 1/h, you see here we know that 1/0 is undefined, any number divided by 0 वो नॉट डिफाइंड होते हैं। पर अगर उसके सामने अगर हम लिमिट लगा लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, एनी नंबर न्यूमरेटर में 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, वॉट एवर, एनी नंबर डिवाइडेड बाई h विच इज डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0, दिस इज not same as 1/0, okay, so this will not be not undefined, this will be defined। 1/0 any number divided by 0 is undefined। लेकिन अगर हम उसके पहले एक लिमिट लगा लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, एनी नंबर न्यूमरेटर में आप चाहे दे सकते हो, डिवाइडेड बाई h, दैट इज इन डिनोमिनेटर में अगर एनी नंबर टेंडिंग टू 0 अप्रोचेस टू 0, इट इज नॉट 0, if in the denominator if you write 0 then it will be not defined, not 0, approaches to 0, tends to 0, 0 नहीं, 0 के आसपास है, 0.0004 हो सकते हैं, 0.0008 हो सकते हैं, it will be 0.000038, whatever may be the value, it will be not exactly 0, if I write exactly 0 in the denominator it will be not defined, okay, but if I write इन डिनोमिनेटर एनी नंबर विच इज टेंडिंग टू 0, 0 के आसपास है, ठीक है, 0.0004 वॉट एवर मेरी नंबर, एग्जैक्ट 0 करने से आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोचेस टू 0, टेंडिंग टू 0, तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होता। अब ये नॉट डिफाइंड नहीं होता तो क्या होता है, इसका वैल्यू होता है अब इन्फिनिटी। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, okay, it will meaningless it is, but if I take limit h approaches to 0 1/h, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 लिखने से अनडिफाइंड होते हैं, बट डिनोमिनेटर विच इज टेंडिंग टू 0, it may be 0.0002, it may be 0.000056, whatever, it is tending, the denominator, the value which is tending to 0, that is meaningful, it is defined, and the value of the answer will be in that case infinity। see the difference now। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं इस इन्फिनिटी का। सपोज आप लोगों को एक बिस्कुट दे दिया गया है और एक बिस्कुट को सपोज 100 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करते ही रहोगे, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बी इंक्रीज्ड, स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ सकता है, तो जितना स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ता रहेगा, आप उस बिस्कुट्स को डिवाइड करते ही रहोगे। एक पार्टिकल को हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी मतलब वक्त आता है कि डिवाइड करते करते इतना ही छोटा हो जाता है कि हम लोग मतलब आँखों में देख भी नहीं सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप इन दैट केस, बट स्टिल it is dividing and the particle exists, okay, tends to 0, it is not 0, see, okay, this tends to 0, मतलब 0 के आसपास है, 0 नहीं है, 0 अगर होता तो कोई डिफाइन नहीं होता, 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0,
ओके आप एक पार्टिकल को या एक बिस्कुट को डिवाइड करते ही जा रहे हो, इट इज टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू वेरी स्मॉल वैल्यू, टेंडिंग टू जीरो, बट इट्स नॉट जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है, बहुत छोटा है, चाहे इतना मतलब छोटा हो गया कि ये हम लोग आंखों में देख भी नहीं सकते, पर वो है, इट एग्जिस्ट, इट्स टेंडिंग टू जीरो। ओके, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाई वेरी 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 स्मॉल नंबर इज इन्फिनिटी, टेंडिंग टू जीरो। अगर हम डिनोमिनेटर में रखते हैं इसलिए इन्फिनिटी आता है ये लिमिट का केस में, लेकिन एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। यू शुड रिमेंबर दिस डिफरेंस। अच्छा, और एक बात, सपोज लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो बाई एच, what will be the answer of this? See, limit h tends to 0. In the numerator there is perfect 0 and in the denominator the value approaches to 0. ऊपर perfect 0 है और नीचे value which is approaching to 0, means it may be 0.0002, it may be 0.000005, okay, whatever may the value which is tending to 0, not 0. If I write 0 by 0, then it will be obviously not defined. No, in the numerator this is perfect 0, but in the denominator value which is approaches to 0. Okay, so the answer will be this value is 0. This is not an indeterminate form. See, this is not an indeterminate form. 0 divided by any number approaches to 0 it will give you answer 0. This is not an indeterminate form. 0 divided by any value approaches to 0 means the value which is slightly greater than 0, not exactly 0, slightly tending to 0, greater than or less than 0, 0 के आसपास है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। अब और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी जैसा दिखता है। यू सी, वी ऑल नो दैट 1 टू द पावर एनीथिंग, any number whatever, 1 to the power anything, it will give you 1. But here in the calculus we have learned that 1 to the power infinity is an indeterminate form. Why it is an indeterminate form? Because this 1 is not the perfect one. If I write perfect 1 to the power infinity, this will give you 1, but this 1 to the power infinity is not the perfect one. Why? Let us take an example. Suppose if I take limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x. See, this is an 1 to the power infinity form. Now see here, this 1 to the power infinity form, this is not the perfect one. Okay, ये perfect one नहीं है। क्यों? See here, x approaches to 0 means 1 plus x will be approaches to 1. See, approaches to 1. Okay, so this value is approaches to 1, approaches to 1 to the power infinity. This is a perfect one. Perfect one लेने से 1 ही होता है, perfect one to the power infinity it will give you 1, but this is not the perfect one. Okay, x tends to 0, 1 plus x also it tends to 1, it's tending to 1, 1 के आसपास है, 1 नहीं है, this is not the perfect one. Okay, so this 1 to the power infinity, that's why it is an indeterminate form. So I have discussed mainly today this 0 by 0, infinity by infinity, and 1 to the power infinity, these three main indeterminate form types. So in total there are 7 indeterminate form. See, there are total 7 indeterminate forms: 0 by 0, infinity by infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, infinity into 0, and infinity minus infinity. And today I have discussed the three main indeterminate form, which are 0 by 0, infinity by infinity, 1 to the power infinity. I think you have got it. Now, how to solve this indeterminate form? इस indeterminate form को कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो एक रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, इससे हम indeterminate form का लिमिट निकाल सकते हैं। सी, इन एल हॉस्पिटल रूल इट इज सेड दैट अगर आपका जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, individually both the functions of numerator and denominator you have to differentiate both the functions of numerator and denominator. If you get again that 0 by 0 or infinity by infinity form,
then again you have to differentiate. That just to remove that 0 by 0 and infinity by infinity form, you have to differentiate individually the functions given in the numerator and denominator at a time. ओके जब तक 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती पूरी तरह से, until the indeterminate form is removed, you have to differentiate individually both the functions given in the numerator and denominator part. सो इसी कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल. सो यही लिमिट का यूज़ है यहाँ पे कि हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का भी आंसर निकाल सकते हैं. इनडिटरमिनेट फॉर्म का वैल्यू भी हम डिटरमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लिमिट एंड दिस एल हॉस्पिटल रूल. दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिमिट एंड एल हॉस्पिटल रूल. So I think you have got this. Today is up to this. I think the concept of this indeterminate form is very much clear to you now. In the next video, I will provide you some solvings regarding this indeterminate form. Okay. Today I have just discussed the topics of indeterminate form and the various forms of दिस इनडिटर्मिनेट 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे आया, कहाँ से आया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हम लोग निकाल सकते हैं. सो टुडे इज अप टू दिस. नेक्स्ट वीडियो यू विल गॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म. सो टुडे इज अप टू दिस.